Namaste, everyone, and welcome to Divine Harmony Tarot. Are you also curious about different dimensions of love and spiritual connections? In this video, हम बात करेंगे about twin flames and soulmates. This is a very interesting topic because जब मैं लाइव टैरो रीडिंग करती हूँ and मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स जो पूछते हैं मैम क्या मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ या सोलमेट जर्नी में हूँ. ओके, ऑन दैट क्यूरियस नोट लेट्स गेट स्टार्टेड. सो इस वीडियो में हम जानेंगे व्हाट आर ट्विन फ्लेम्स एंड सोलमेट्स, हाउ डू यू आइडेंटिफाई योर ट्विन फ्लेम, द ट्विन फ्लेम जर्नी, understanding soulmates, and practical strategies for nurturing these connections. So let's start with defining कि twin flame और soulmates होते क्या हैं. So twin flames are often described as two halves of the same soul. एक ही आत्मा के दो भाग, ठीक है. एक होता है डिवाइन मैस्कुलिन, एक होता है डिवाइन फेमिनिन. ये जो दो भाग होते हैं, क्योंकि ये एक ही सोल के पार्ट हैं, तो ये एक दूसरे को मिरर करते हैं. जैसे कि आप एक शीशे के सामने खड़े हो एंड जब ये मिरर करते हैं, ये चैलेंज भी करते हैं कि आप और पर्सनल ग्रोथ करो एट अ डीपर लेवल. दे वांट टू प्रमोट पर्सनल ग्रोथ. ओके, सोलमेट्स ऑन द अदर हैंड आर इंडिविजुअल जो पास्ट लाइफ में आपके साथ जुड़े हुए थे. ओके, दे आर दोज कनेक्शंस हु वाइब्रेटेड एट द सेम फ्रीक्वेंसी इन योर पास्ट लाइफ एज यू, जिनके साथ आपकी बहुत ही गहरी बॉन्डिंग थी पास्ट लाइफ में. लाइक यू कैन हैव अ लॉट ऑफ पीपल सोलमेट्स, like it can be a family member, a friend, anyone. Okay, whereas a twin flame is only one. So these are the two types of connections. Now we will start with identifying your twin flame. तो मैं अभी आपको 4 साइन बताऊंगी. तो पहला साइन ये होता है, इमेजिन मीटिंग समवन फॉर द फर्स्ट टाइम. आपने पहली बार आप किसी से मिले हो एंड आपको ऐसा लग रहा है कि यू हैव नोन देम फॉर एवर, बहुत पहले से उनको जानते हो. ये जो कनेक्शन है ये काफ़ी तुरंत इमीडिएट टाइप का कनेक्शन है, काफ़ी प्रोफाउंड है, एज इफ यू आर ड्रॉन टू ईच अदर बाय invisible force. Okay, so this magnetic attraction is a common sign of meeting a twin flame. So you will experience an overwhelming sense of comfort in their presence. Even if you just met, आप अभी मिले हो लेकिन आपको ऐसा लग रहा है आप उन्हें बरसों से जानते हो. So this is number one sign. Number two, your twin flame often feel aspects of yourself back to you. हमने अभी बोला था कि दिस इज अ मिरर टू योर सोल, राइट. सो बोथ पॉजिटिव एंड चैलेंजिंग चीज़ें आपको रिफ्लेक्ट होंगी अपने अंदर, क्योंकि आप वही चीज़ें दूसरों के उस ट्विन फ्लेम में देखोगे. क्योंकि एक ट्विन फ्लेम जो होता है ना, वो आपकी डीप पर्सनल ग्रोथ करवाता है. ओके, भले ही बाकी दुनिया उनसे डरती हो या उनको बताया नहीं या वो किसी की सुनते नहीं, बट आपकी वो ज़रूर सुनेंगे. सो दैट इज़ हाउ स्ट्रॉन्ग द मिररिंग हैपन्स विद द ट्विन फ्लेम. सो it is also a sign that your twin flame is reflecting these aspects of your personality. So ये था नंबर 2. मूव ऑन करते हैं नंबर 3 पे, दैट इज डीप इमोशनल कनेक्शन. सो यहाँ पे क्या होता है कि आप इतना डीप इमोशनल बॉन्ड फॉर्म कर लेते हो अपने ट्विन फ्लेम के साथ, ये प्रॉपर एक पर्सन के साथ जो कि आपका ट्विन फ्लेम है. लाइक इंटेंस जॉय, इंटेंस पीस, intense sorrow, everything is like very extreme. So this emotional connection often feels a sense of being understood on a level जिस जहाँ आपको किसी ने नहीं समझा. It is beyond words. कभी कभी होता है ना कि हम एक इंसान से कुछ नहीं भी कह के बहुत कुछ कह जाते हैं. So that is how a twin flame, you know,
person is. That is how the connection is. Moving to the fourth sign, and this is very important, okay? This is where you need to pay attention to patterns. Okay, so you will see frequent coincidences where both of you have like similar life experience, similar goals, similar dreams, similar passions, and you might both discover that you have a hidden talent जो कि आप खाली उस इंसान को बताते हो, एंड आपने एक दिन आप सोच भी रहे होगे कि ये बात तो मैंने कभी किसी को बताई नहीं, तो मैंने इस इंसान को इतने easily कैसे बता दी. Okay, so this is a very big sign that this person is your twin flame. So now अब हमें चार साइंस पता है. अब हम देखते हैं कि what is the journey like. ट्विन फ्लेम की जो जर्नी होती है उसमें डिस्टिंक्ट स्टेजेस होते हैं. सो जो पहला स्टेज है दैट इज मीटिंग. So the initial meeting with your twin flame can feel like a life altering event. Okay, क्योंकि आप बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, बहुत इंटेंस इमोशनल बॉन्ड है, तो ये आपको लाइफ में ऐसा फील कराएगा कि आप और ऐसे इंसान से कभी मिल ही नहीं सकते थे, ये तो फेट ने आपको मिलवाया है, यू नो. एंड देन स्टार्ट्स द नेक्स्ट स्टेज, दैट इज द हनीमून फेज. So after meeting, you will experience this intense joy. You might feel this incredible sense of, like you found your missing piece. So that is the next stage of being in a twin flame journey. The third stage is challenge and separation. Yes, वो भी आता है. So let's first talk about challenges. So as the relationship deepens, it may bring to light unresolved issues, right? क्योंकि ये इंसान आपको मिरर कर रहा है, ये एक ही सोल का पार्ट है. So this can lead to lot of लड़ाई झगड़ा, lot of periods of separation. 2-2 महीने बात नहीं हो रही, 2-2 साल बात नहीं हो रहा, right? um, you might also face lot of disagreement, emotional turmoil, temporary split भी हो सकता है. This separation is necessary. ओके, ये ध्यान से सुने, ये सेपरेशन जो ट्विन फ्लेम जर्नी में होता है ये बहुत ज़रूरी होता है फॉर बोथ इंडिविजुअल्स टू वर्क ऑन पर्सनल ग्रोथ एंड हीलिंग. क्योंकि ये इतना इंटेंस बॉन्ड होता है, तो जब लड़ाई झगड़े होते तो हर्ट भी काफ़ी इंटेंस होता है. ओके, तो उससे हील करना एज ए ह्यूमन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ ओन ग्रोथ. ग्रोथ बिना पेन के नहीं पॉसिबल है. हम आगे चलते हैं ऑन द लास्ट स्टेज, दैट इज द ग्रोथ फेज. ओके, तो जब आप अपने ट्विन फ्लेम से वापस रीयूनाइट करोगे, ओके, वो दो ही चीज़ हो सकती है, या तो आप रीयूनाइट करोगे या तो आप नहीं करोगे. अगर आप रीयूनाइट करोगे तो वो तभी होगा when you're focusing on mutual growth, contributing to each other's life purpose. You have healed yourself and reached to a conscious level of spirituality जहाँ पे आप दूसरों का बेनिफिट देखोगे, आप मैं ज़्यादा नहीं करोगे. ओके, you might also would want to work together, to support each other, like a joint project or a shared dream. बट जहाँ पे आप रीयूनाइट नहीं कर रहे हो, एंड दैट इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी, दैट पॉइंट ऑफ टाइम that growth will be your own growth till you reach the highest level of spiritual consciousness. So that was in a nutshell the twin flame journey. Now let's move on to the soulmate connection. I am really intrigued by soulmate connection. So soulmate जैसा हम बॉलीवुड हॉलीवुड में सुनते हैं, वो काफ़ी ग्लोरीफाइड वर्जन है, बट स्पिरिचुअलिटी में इट इज़ मोर अबाउट हाउ the other person enrich our lives. Okay, let's see what a soulmate is. A soulmate is someone who provides support, understanding. जब लाइफ में सब खराब चल रहा हो, जो इंसान हमारे बगल में खड़ा है, ओके, you might have a friend or a partner who consistently stands by you,
offering empathy, encouragement, even when you're struggling with personal issues. Okay, so that is your soulmate. Soulmate connections are often harmonious and effortless. Sometimes जब आप कोई relationship में हो, and mostly soulmate comes after a twin flame. I don't know what is this lesson universe wants to teach us. I think it is more towards personal growth and spiritual awareness. But mostly जो अभी तक मैंने cases देखे हैं लाइफ में, personal and through my clients, is that twin flame पहले आता है and then comes the soulmate, and most of the times, and जो soulmate आता है, you will start to value your soulmate more because you have gone through a twin flame journey and you have raised your consciousness. You're more aware of relationships now. um, so with soulmates everything will be so effortless. It's like coming back home. They also are very like, the interactions with soulmates are like smooth, natural. You have similar taste in music, hobbies, so on and so forth. So you have a very deep and fulfilling connection. The other sign is growth and transformation. It is about pursuing your new interest. Okay, twin flame में था joint interest, and they were just mirroring you. Here, these are two different people having two different interests, and they want you to pursue your interest. Okay, they encourage you to become the best version of yourself. Okay, um fourth sign is deep emotional bond. You also have a very deep emotional bond, where here this bond is all about that you can openly express, okay, and be vulnerable without fear of judgment. वहां पे क्या था ट्विन फ्लेम में कि आप क्योंकि खुद ही को देख रहे हो इन द मिरर, that person knows, can call out your bullshit. But यहाँ पे this person, with your soulmate you can become vulnerable. No one is going to judge you. You have that emotional security. Okay, uh, the fifth and the most important sign is life enriching impact. A soulmate has a significant impact on your life, often contributing to your happiness and fulfillment. For instance, you might notice that your soulmate's presence brings a sense of joy and completeness that enhances your overall well being. They might also inspire you to pursue your passion and achieve your goals. Now, let's move on to the next segment. So, in this segment, we are going to discuss practical strategies for nurturing twin flame and soulmate connections. We'll explore actionable strategies जिससे कि you can attract, recognize and nurture your twin flame or soulmate connection. These are very practical tips जो आप खुद कर सकते हो, and it can also help deepen your current relationships. Okay, let's get started. So the first is self reflection and inner work. Why it is important? Before you can fully connect with a twin flame or soulmate, you have to understand कि आपको heal करना पड़ेगा. Self reflection is very important because once you identify your personal issues, it cannot impact your relationship. So उसके लिए आप क्या कर सकते हो? आप journal कर सकते हो. जैसे कि if you notice कि same issues हो रहे हैं आपके relationship में, so journaling will help you identify the underlying cause and work through them. Okay, it can help you uncover patterns and gain insight in your emotional needs and your goals. Therapy is also very important because it can help you heal. Like working with a therapist can help you develop healthier relationship pattern and improve self-awareness. Moving to the next thing is meditation and mindfulness. Doing daily meditation, mindful practices can
help in paying attention to the present moment. This is very important when you are in a relationship. And being more aware with your partner will help you align with your true desire. You will open yourself to spiritual connections. Moving on to the third one, strategy, and it is about setting clear intentions through visualization. When you are visualizing, you can manifest your twin flame or soulmate. Create a vision board. You can use images, words, symbols, and you can place it somewhere nice, like create a mood board. Or you can write affirmations about the kind of relationship you want. Daily visualization, like you can spend a few minutes, interact with your desire, imagine the emotion, experiences. That really helps you to visualize the kind of person you are attracting in your life. Next is enhancing communication skills. Effective communication comes from active listening, having an open dialogue with your partner. It's very important to have honest communication. It can help you build a very strong foundation and you will connect more deeply with your twin flame or soulmate. Engaging in shared activities, creating your own sweet ritual, common interests, like you can go for hikes together, you can cook a meal together, date nights, very important. Also, practicing gratitude. I think this is something that we need to talk more about. Like when we already are with someone, we forget how we were single and we never thank the universe after we receive the gift, okay, of companionship. That is very important. Last but not the least is maintaining personal growth. This personal growth ensures that you continue evolving, which positively impacts your relationship. A healthy individual contributes to a thriving partnership. I always say you cannot pour from an empty cup. अगर आप खुद ही खाली हो तो जो दूसरा इंसान है उसके कप में आप क्या ही डालोगे। अगर आप खुद में काफ़ी खुश हो तो आप दूसरे के कप में भी थोड़ी सी खुशियाँ भर सकते हो। ओके, सो incorporate these practical strategies into your life. You can enhance your ability to attract, recognize, and nurture your relationship with both your twin flames and soulmates. Don't forget to like, comment, and subscribe for more spiritual chats on relationship and personal growth. I hope it cleared most of your doubts. Share your thoughts and questions in the comments, and I will answer them all. Till then, bye.